Shana sir, very good evening to you, sir. सुनाई दे रही है Hi, आपकी आवाज Sushant. बहुत nice and clear. So Right. thank you so much, Nilesh sir, for joining us. हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपसे बात करें. We are very Right. very anxious. We have spoken to your brother twice, but Right. आपने जब से recently भी आपने जब मुद्दा उठाया दिशा सालियान और सुशांत का, तब से हम सोच रहे थे कि आप भी अगर आ जाएं तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग दैट सर. मैं बस क्विकली आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ. हम लोग स्पेस करते हैं. हम एसएसआरियंस में से बहुत सारे लोग स्पेसेस करते हैं. एंड वी आर कंटिन्यूसली डिस्कसिंग बोथ दिशा सालियान केस एंड सुशांत सिंह राजपूत हत्या केसेस, दोनों के दोनों. उस पर हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द केस इटसेल्फ एंड वट एवर इंफॉर्मेशन जो आती है हम थोड़ा उस पर रिफ्रेश रहते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो फील कि वी शुड नॉट फॉरगेट. हम क्वेश्चंस बहुत रेज करते हैं, आपको भी बहुत सवाल आते हैं, वी नो. सो just wanted to say that we really appreciate sir कि आप अभी तक consistently, you and your family, आप सब लोग consistently हत्या पे ही emphasis दे रहे हो. You have not changed your stance. So with that sir, just if you want to say a few words. Yeah. First of all, thanks for having me here. And one second, can you hear? Can you hear me still? जी जी, आ रही है आपकी आवाज जी. Acha. And I'm really proud of all of you all. Yeah. कि इतना वक्त हो गया. Still, you guys haven't given up. Like my family has it. I mean, we will not leave it uh, till we know actually who did it. We know who did it, but we want the world to know who did it. And uh, and we have spoken about this even to the authorities. We have told them our side of the story, and you know all that. I mean, my brother must have briefed you about all that. But what if you go back 3 years? I mean, it's been 3 years now. Uh, what disturbed me or what made me upset that time was this entire case was diverted like it was a drug case. No, sir, it was not a drug case. It was a criminal case. It was a murder case. And I wanted to tell Mr. Goswami, also the editor of Republic, back then, not now, that, sir, I think we are missing the point here. We are making this a drug case. Don't make this a drug case. It is not. I mean, now I speak to a lot of lawyers because of my profession. I speak to a lot of lawyers. I speak to a lot of policemen uh, of the highest authority. And you ask any policeman in the world, you ask any lawyer in the world, they will always tell you that after a murder case, even if it's a suicide case, what happened 48 hours prior to that case, we don't still know about it. आज तक पता नहीं चला कि where were these two in the last 48 hours before they died. I mean, I still, when I talk to these authorities, I still ask them कि साहब इसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता कि you made it into a drug case, ठीक है चलो. But that was not the case. They were murdered. And I still believe they were murdered. And in the last 48 hours, I wanted to know when was the last time and in whose car Sushant drove into his apartment or his society or wherever the building that he stayed in. Now, we used to stay in Bandra. I know that locality very well. Otters Club, Bada Junction, it's a big ass junction. Where are the CCTVs? I need to know who drove Sushant inside the building? Who drove Disha inside the building? Did she come in a cab? Was she alive when she got into the building? No, I am dead sure she was not even alive when she got inside the building. Even Sushant wasn't. Only the dead bodies had got inside the apartment or the building, and we were not discussing that part of the issue. We were just discussing his dead body, the mark on his dead body. I mean, the bodies were disposed of within 24 hours. And if you remember what Dr. Swami, Subramanian Swami had said back then, it is a similar case to Sunanda Pushkar case. Now, Sunanda Pushkar, her body was not available for forensic.
So the evidence that was collected, we don't even know if that is Sushant Singh Rajput's forensic or if it's Disha Salian's forensic. How do we know? Thackeray was the chief minister. He could have manipulated anything. He could have put a sticker on any report and said that this is Disha Salian's report. How do we know this was not Disha Salian's report? Because CBI entered 70 days after the court allowed them to enter the state or into this case. So there are a lot of questions unanswered, and because the bodies are not available, I mean, I truly believe what Dr. Swami said back then is the actual fact. When you don't have the body, how are you going to know what actually has happened? So the CBI, whatever the CBI has collected, and now as far as I know, uh, they are very much into this case. They're finding trails. They have found new trails. They have found new evidences, and that's what is taking this long because they have found something. Now they won't discuss everything because this matter is sub judice. They won't discuss everything because it's under investigation. But Sachin Vaze, who investigated all this, he was the investigation officer. He was the same guy who planted those gelatin sticks below Mukesh Ambani's house. He was the same person who murdered Mansukh Hiren, and he was the same person who was the IO for both these cases, and he was the same person who got Doctor, I mean the editor of Republic, Arnab Goswami, out of his house. He got him jailed. So the same person doing all the dirty job for Mr. Thackeray. I feel there is a lot more to this case, and I believe in God that someday uh, this Thackeray bitch is going to be behind bars. He's going to go to jail for all that he has done. He was there at the party, and I'm dead sure about it. He know everything about it, and the fact is, we still don't have the CCTV footage. We still don't have the CDR reports. I mean, maybe when CBI discloses or closes this case, they will show each and every footage of what happened from 48 hours till their death. I want to know what happened before 48. I mean, during those 48 hours, where were they? Whom did they meet? Was someone in the house? Why was she thrown naked? सर पुलिसमैन टोल मी सर वो तो कपड़े निकाल के फेंकेंगे ना जिसको पता है क्योंकि नहीं तो कपड़े पे भी फिंगरप्रिंट आ सकते हैं क्योंकि कपड़े पे फिंगरप्रिंट आ सकते तो शी वाज थ्रोन नेकेड आई मीन व्हाई वुड अ पर्सन रोम अराउंड नेकेड इन ओन हाउस who was there in the house now I will not chase the boyfriend I will not chase Sanjay Singh or Riya Chakravarti I don't care about them I want to know what happened in those 48 hours before their death. So that is what the target should be. Someday now in the near future, when this case will again be in the electronic media, it will again be in the forefront of media. Uh, I want all of us, to know and to ask the authorities what has happened in those 48 hours before the death, before they were murdered, and actually everything will be clear only after you know what has happened in those past 48 hours because we still don't have the CDR report. I mean, I don't know about it. Maybe the authorities still have it. So, because Sachin Waze was such a shrewd guy and he knew how to clear the evidence. So, what happened in those 70 days was Sachin Waze was given a full on freedom to clear whatever was left. And only a policeman can clear the evidence, boss. Now, we are not so stupid कि कोई प्लम्बर को और कोई क्लीनर को नहीं भेजेगा to clear a crime scene. They will need to have someone who has already cleared crime scenes, and Sachin Waze was the point man for them. And we have whatever we could. I mean, we have already instructed. I don't want to take names. We have done everything possible. So I feel because you asked me to introduce what I feel. So this is what I feel that whenever this case is going to come in the forefront again, I'm dead sure about it. So as soon as it comes, we need to know. I don't care who Riya Chakravarti is. I really don't care. I don't care what drugs she used to have and when she used to sleep, how bad her career was, or how Karan Johar became an asshole to Sushant Singh Rajput. I don't want to know all that. I want to know the crime scene. I want to follow the crime scene. So I request all of you all, whenever this comes in the forefront again, we need to follow the crime scene because they will try to divert it. They will try to divert something because this Thackeray bitch is very
he is very well connected with all of this. So he will try to create a scene where automatically the issue gets diverted into something else, like how they did it last time 3 years ago. It went on to become a drug case. I don't think it was a drug case at all. Even if it was, I don't care. I'm only concerned about the murder scene, the crime scene, and that is what I think should be followed. Ji sir, what what an introduction. Thank you so much. I mean, आपने इतने सारे points पे hit किया है जो that are really making us feel कि your commitment is real. Because आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये drug case है या नहीं भी है. Drug case है नहीं, but अगर है भी, it doesn't matter. दोनों की फिर भी हत्या हुई है. And आपने बताया कि CCTV footage missing है. And then, you know, आप बता रहे हैं कि कुछ नया मिला है CBI को. That is very, that's heartening. That's a good thing because हम आपसे actually पूछने वाले थे CBI की lack of progress के बारे में. So sir, I just wanted to ask you sir कि ये जो SIT जो establish हुई है by Fadnavis ji, is there any update or anything? I know कि sir आप बहुत कुछ हमसे share नहीं कर सकते, but generally speaking, is there any update? Has it moved or is it just stuck, sir? अगर आप generally जवाब दें तो that would be great. Thank you. Ma'am, actually, I can't go into the details of what is going on because it won't be right. Uh, but I can assure you कि जो चल रहा है वो बहुत सही दिशा में चल रहा है. और uh, जल्द ही, I mean, I don't want to be politically correct about this because by heart I'm not a politician. I don't want to be. Uh, I want the real criminals to be booked and to go behind jail. So I can assure you that it is going in the right direction, and in a few months you will get the result as expected, as we all accept. Okay, so that's good sir कि time frame भी आपने डाल दिया. And आप अगर बता रहे हैं कि it's moving forward, then we trust you on that. So that is very good. तो मैं उसमें बीच में details में I won't go because हम सोच रहे थे कि हम आपसे पूछें कि when can we expect arrests and things like that. But आप कह रहे हैं कि you will not be able to give specifics, but it's moving forward. So that is very Because, good. ma'am, it is sub judice, so you जी जी understand जी. the Yes. gravity of the matter. बिल्कुल बिल्कुल नीलेश जी, हम समझ रहे हैं आपकी बात. एंड वी डोंट वांट कि कुछ डिरेल हो जाए बिकॉज यू नो वी आर सेइंग समथिंग विद यू, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. वो हर बहाना ढूंढेंगे, जैसे आपने कहा, हर बहाना ढूंढेंगे, ये भी एक बहाना बन जाएगा. सो वी डोंट वांट टू गिव देम दैट. आपसे सर ये पूछना था कि आपने फिर से वाजे का नाम लिया, जो कि बहुत ही मतलब हिज रीइंस्टेटमेंट और जो सस्पेंड थे, जो रीइंस्टेट किया था, the timing of it, and then if he's there in both the crimes, and if he's there from execution to cover up, तो वो तो इस वक्त custody में है. So is it not possible for SIT and CBI to just interrogate him and put a charge sheet on him at least and force him to, you know, मतलब कि वो सच उगलें जब वो जेल में है? मैम, वही मैं आपको बता रहा हूँ. दे मस्ट हैव ऑलरेडी डन इट बाय नाउ. और अगर नहीं किया होगा तो दे विल डू इट whenever they feel it's appropriate. बट मुझे जो लगता है उन्होंने कर दिया होगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म कि अगर एक आदमी उसका उसका क्राइम करने का प्रोसीजर सेम है. आप अगर मुकेश अंबानी साहब के घर के भी नीचे अगर देखेंगे, जब उसने सीसीटीवी पहले गायब किए थे, वो इसमें आया था, पीपी किट में आया था, और उसका मतलब क्राइम छुपाने का और क्राइम से एविडेंस गायब करने का उसका प्रोसीजर सेम है. पहले वो हाथ सीडीआर पे डालता है, सीसीटीवी पे डालता है, उनको गायब करता है, उनके सर्वर्स को गायब करता है, वहां पे गड़बड़ी करता है. दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव इन्फॉर्म कि उसको अगर आप जो भी डिग्री ऑफ इंट्रोग्रेशन आपको उनको करना है, आप उनको कीजिए, क्योंकि वो आदमी का आप गला पकड़ोगे तो ही वो आदमी सच बोलेगा, क्योंकि वही क्राइम सीन का एविडेंस गायब करने से लेके इसको सारा डिस्टर्ब करने का अगर किसी ने काम किया फ्रॉम द पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो ठाकरे के नजदीक थे. अभी ठाकरे रोज उठ के कमिश्नर को फोन नहीं करेगा, वो ऐसे ऑफिसर्स को ढूंढेगा जो उसके लिए कुछ भी कर सकते, विल डू द डर्टी लॉन्ड्री फॉर हिम.
सो व्हाट दे डिड इज, और ये लाया उस चीज के लिए गया ताकि ये सारा चीज, उनको तभी शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, उनके दूसरे कामों के लिए वो लाया गया था। पर रोज कमिश्नर को फोन करना पॉसिबल नहीं होता किसी भी चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर को। तो वो ऐसे ऑफिसर्स ढूंढता है जो उनके लिए काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी सचिन वाजे का नाम ऊपर गया है, और जितना मुझे पता है वहां से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उसका रोल क्या है, कितना है, उसका ग्रेविटी क्या है, वो सारा चीज आने के बाद जब फाइनल रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से बाहर आएगी, 101% उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है ये केस को लेके, तो सचिन वाजे से ही आएगी। मैंने तो बार बार यही बोला है कि ये बॉयफ्रेंड, ये केयर टेकर, ये वो कुछ नहीं है। वो सचिन वाजे को पूछो, उसने 70 दिन में एविडेंस को जो उसने वैक्यूम मारा है, उसने जो क्लियर किया है, वो बड़ा बदमाश है। उसको पहले पकड़ो। अगर उससे इंफॉर्मेशन नहीं निकलती है तो भूल जाओ कि वो संजय सिंह से निकलेगी, या वो रिया चक्रवर्ती से निकलेगी, या किसी और से निकलेगी, क्योंकि ही वाज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर ऑल दैट। ही इज द वन पॉइंट मैन हु हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो क्राइम सीन पे जा सकता है। घर का आदमी उनका बॉडी डिस्पोज होने के बाद क्राइम सीन पे जा भी नहीं सकता। तो जा कौन सकता है? सिर्फ सीबीआई की टीम जो 70 दिन के बाद गई, या तो फिर इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, जो मुंबई पुलिस की जो जानी, और उसमें से सचिन वाजे था। तो उसके अलावा कोई क्राइम सीन पे जा भी नहीं सकता। तो उनको बिना उठाए ये इंट्रोगेशन या ये इन्वेस्टिगेशन पूरा ही नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। वो अगर इतने अहम हैं कि उन्हें सब पता है, सो मोस्ट ही बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। you're राइट सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सो दैट्स गुड टू हियर दैट कुछ हो रहा है उसमें विदाउट यू डायरेक्टली टेलिंग अस। वी अंडरस्टूड आपने जो कहा। बस एक जस्ट अ स्मॉल पॉइंट ऑन दिस सर, एंड आई एम सॉरी दैट हम इतने डिटेल में जाना पड़ रहा है, बट ओनली बिकॉज आपके भाई ने ये बात रेज की थी कि एक ऑफिसर जो एसआईटी में बिठाए गए हैं, ही वाज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टीम, तो वो सैबोटाज करने करने का शक था आपके भाई को। तो उस पे कुछ अपडेट आप दे सकते हैं सर, इफ यू कैन। Logically speaking, being in the government, and Mr. Fadnavis sir being the home minister of uh, this government, I don't think such a thing will be possible for any one officer, even in the SIT, to disturb any investigation. And if Nitesh has a clear cut picture of this person is a disturbing factor in the SIT, then I think Mr. Fadnavis sir will handle it properly. Uh, मुझे जो लगता है वो, और ऐसा कुछ होगा तो मुझे नहीं लगता अ, इतना कोई वॉरियर है जो फडणवीस साहब के बिठाई हुई एसआईटी के अंदर रह के दूसरे का काम करे। आई डोंट थिंक एनीवन हैज द गट्स टू डू इट, एंड सच अ थिंग विल नॉट हैपन। आई डोंट थिंक सो, एंड इफ नितेश हैज समथिंग टू ऐड टू इट, आई थिंक ही विल इन्फॉर्म मिस्टर फडणवीस सर ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर। री, ओवर टू यू। Yeah, thank you, Anvai. First of all, welcome Nilesh Rane sir. Thank you so much for agreeing to this. My question, or more like feedback, would be that when BJP came into power in July 2022, we were very optimistic that now things will move forward. Then Roop Kumar Shah ji आए थे, वो जो mortuary attendant थे, he came out in the media and he openly said that police is responsible, and I saw his body, there were many injuries. He came on so many channels and he said the same thing. Then Fadnavis ji ne SIT announce kiya for Disha Salian's case. So sir, it's just like we are not seeing any progress. CBI, ED, NCB, there is accused number one, there is no progress. So if you, like you said, Aditya Thackeray is responsible, so isn't his role or his power just limited to the state? Why is center not like doing more in these cases? मैं बोलूं मैम? जी जी, please, thank you sir, go ahead. इफ यू रिमेम्बर 2020 में क्या हुआ था, ये गवर्नमेंट में थे, एंड दे डिड नॉट अलाउ सीबीआई
to enter Maharashtra for 70 days, 70. उन 70 दिनों में whatever evidence they could destroy, they destroyed it. जैसे मैंने बोला 24 घंटे के अंदर bodies dispose किए गए. Now, if you dispose of a body, what is left to do? What is left to do? I mean, in a forensic department, what are they going to do? Nothing, right? I mean, वो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा they'll have 2-3 plastic bottles to display and give it to the CBI. That's what they can do. Like that's why I mentioned Sunanda Pushkar's case. कि जब bodies को dispose किया गया, what else is going to happen? What is left? But still, after 70 days, when the CBI entered, and whatever they could do, कूपर हॉस्पिटल हुआ, क्राइम सीन का ये हुआ, मतलब जहाँ पे क्राइम सीन हुआ, उनको Recreation, लगा, yes. उन्होंने सारे ट्रेल ढूंढे, एंड वो ट्रेल ढूंढते ढूंढते अभी उनके पास साइजेबल एविडेंस आ चुका है. जो आदित्य ठाकरे हो या उनकी जो गैंग हो, उसकी जो उनकी नहीं उसकी जो गैंग है, उस वो वहां पे थे, या वहां पे जो क्राइम हुआ है वो उनकी ट्रेल हमसे या हमारे जैसे और भी बहुत लोग थे ना, जिनको उन्होंने इनवाइट किया था बोलने के लिए कि आपके पास किस चीज का एविडेंस है. You give us the evidence, whatever you have, give us the information, input of whatever you have. So whatever we could, and whatever people like us who had whatever input, उनको जाके दे दिया है. तो मेरा बोलने का मैटर यही है, ये क्राइम सीन को 70 दिन के लिए वॉश आउट कर दिया था. आप सोचो, सचिन वाजे जैसा आदमी, मुंबई पुलिस से काफी ऑफिसर्स, अगर एक अपार्टमेंट को सिर्फ एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजे गए क्राइम सीन पे, आपके पास क्या बाकी रहता है? That's why I said, now the next time I'm waiting for the CBI to give out its report, its final report. I want to ask them, I want to see the CCTV footage of 48 hours before their death, of both the houses, how they entered, in whose car they entered, whether they entered in a cab, whether they entered in someone else's car. I want to know all of that. So वो जब तक अभी फास्ट ट्रैक पे इसके लिए आया है, एंड आई एम श्योर इट्स ऑन फास्ट ट्रैक नाउ, बिकॉज काफी सारे एविडेंस अभी उनके पास ऑलरेडी जमा होना शुरू हो गए पिछले 6 महीने से, या जितने भी टाइम से उनके पास अभी जो अभी प्रोसीजर फास्ट हुआ है. तो इट्स नॉट अबाउट whether we are in central government and they are in the state government. Now we are in state government and also the central government belongs to us. That's not but the point is they destroyed the evidence for 70 days and then the CBI entered. आप अपना मेमोरी आप पीछे जाके आप याद करो, go back in the memory lane, what happened in 2020. We were fighting that let the CBI come in, because Aditya Thackeray's name was taken in Supreme Court in the first hearing itself. And that's the reason why, and our government didn't take it. I mean, but not our lawyer didn't take it, neither the family. The council of one of the councils took it. There's a very, very powerful man's son involved in this, and that's how Supreme Court was activated. And that's the reason after 70 days CBI had entered the state. और तब तक इन लोग ने अपना काम कर दिया था. बट वो क्राइम है मैडम, क्राइम किसी के छुपाने से छुपेगा नहीं. और आदित्य ठाकरे हो या उसका बाप हो, एक ना एक दिन ये सारा पार्टी टू द क्राइम जो है, ये सारे जेल जाएंगे, और इनको बिना जेल में डाले हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है. जी सर, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो आप रेज कर रहे हैं. कोई भी हो, एनीबडी जिसने हत्या की है, दे आर कल्प्रिट्स. सो किसी के भी बेटे हों, किसी के भी बाप हों, किसी भी पार्टी के हों, हम तो चाहते हैं कि बस न्याय मिले. we don't care really. I mean, as such, हम लोग political movement नहीं है. We are an organic public movement. हम न्याय के लिए खड़े हैं. ये बात बिल्कुल सही है कि most of us lean towards BJP, but that is because in हमारे देश में, भारत में, the country is leaning towards BJP also. तो हमारे group में से भी जो लोग हैं, we're leaning towards BJP. So इसलिए, and but we are also very nationalistic. This group, जो सुशांत सिंह राजपूत and दिशा सालियान से, because हमें पता है कि ये दो. जी सर, बोले आप. Please go ahead, sir. आपने No, I didn't say anything. Oh, okay. So, you know, we see this as बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए. That's why हम fight कर रहे हैं, because हमें पता है कि दिशा सालियान और सुशांत तो जिंदा नहीं होंगे, and हमारे तो वो फैमिली के भी नहीं थे. बट हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में इस तरह की चीज
कोई बड़े आदमी का बेटा जो खुद भी मिनिस्टर है या उसके उसके क्लोज कोई है, ऐसा ना हो कि वो बस छूट जाए जस्ट बिकॉज दे आर सो इम्पोर्टेंट। सो इस ये चीजें आपने जो बताई सर, वेरी क्विकली मुझे आपसे पूछना था परमबीर सिंह के बारे में। नीलेश सर, इज ही ऑल्सो, आपके हिसाब से अगर आप कुछ बोल पाए, डू यू कंसिडर हिम एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दीज केसेस बिकॉज वो उस वक्त कमिश्नर पुलिस थे? Of course he was. Uh, I think I had given an interview to I think one of the channels. I don't remember the name. और मैंने उधर खास करके बताया था कि why does आदित्य ठाकरे go why does he go to this one place which is called Swargiya Balasaheb Thakre's memorial, and it was not even made that time, it was under construction. So all these meetings were handled and all these meetings were conducted there. They were having these meetings every day क्योंकि रोज allegations हो रहे थे, बहुत लोग गालियां दे रहे थे जो देने भी चाहिए, और वो टाइम पे बहुत गर्मी थी, वो केस की बहुत ये गर्मी थी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, परमवीर सिंह कमिश्नर थे, 101% उनको सब कुछ पता था, और अगर उनको पता नहीं था ये मैं नहीं मान सकता उनको, क्योंकि अभी सचिन वाजे जैसे एक ऑफिसर को अगर इतना सारा कांड कर रहा है, but he's handling the case. Obviously, the commissioner, because it's a high profile case, because it's in the media every day. The world was waiting, the country was waiting for what is going to happen next, what is going to happen tomorrow, who's the culprit, who's the real one. वो सब चल ही रहा था. So I'm not that dumb, and I won't deny the fact that उनको नहीं पता होगा, उनको 100% पता होगा. Maybe he didn't know the intricate details about who exactly or what might have happened, but I'm sure Paramveer Singh knows about this case. और उनको, क्योंकि वहां पे मीटिंग शिवाजी पार्क पे रोज होती थी, आदित्य ठाकरे वहां पे रोज जाता था, उनके लोगों को बैठता था, ये सचिन वाजे वहां जाता था, उसको रोज ब्रीफिंग मिलती थी। और आदित्य ठाकरे वो जमाने में, वो टाइम पे 2 बार परमवीर सिंह को मिला। क्यों मिला भाई? तू टूरिज्म मिनिस्टर है, तेरा क्या काम है उनको रोज मिलना? वाई वुड यू मीट अ कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस ट्वाइस इन दोज डेज? बिकॉज ही वॉज शिट स्कैर्ड। तो उसको पता था ये बहुत लॉजिकल एंड तक आने वाला है, और उतने में वो ड्रग केस हो गया। एंड आई गॉट पिस्ड ऑफ, आई रियली गॉट पिस्ड ऑफ कि इसको मत लेके जाओ ड्रग केस पे। संजय सिंह, ही माइट बी अ फ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, बॉस वो उसके साथ फ्यूनरल पे वो गया होगा, कोई भी जा सकता है क्योंकि वो सेलिब्रिटी था। तो मैं अगर सेलिब्रिटी होता और मेरे मेरे फ्यूनरल पे अगर, या मेरे डेड बॉडी के पास कोई खड़ा है, तो क्रिमिनल नहीं हो जाता? उसको चेस कर रहे हैं हम लोग, संजय सिंह को महीना भर चेस किया हमने, एंड द एंटायर मैटर गॉट डिस्टर्ब, मतलब वो पूरा डाइल्यूट हो गया। एंड आई गॉट पिस्ड एंग्री कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई 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 डोंट दे अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट वेयर द केस शुड गो। और वो सारा जैसे उनको चाहिए था, उसको स्केपगोट बना दिया, रिया चक्रवर्ती को, उसको उसको ये कर दिया, पूरा वो केस में इन्वॉल्व कर दिया। और जो हमारा केस था, जो हम लड़ रहे थे कि ये मर्डर केस है, ये मर्डर केस है, आप मर्डर केस पे ध्यान दो, आप किसी और चीज को मत लेके जाओ ये केस, वो सारा जैसा उनको चाहिए था उन्होंने वैसा सक्सेस कर दिया। एंड परमवीर सिंह, लाइक हाउ यू सेड, उनको 100% पता होगा ही, नहीं तो वो प्लम्बर थोड़ी ना थे मुंबई शहर के, वो तो कमिश्नर थे, उनको तो पता चलना ही था। और अगर वो अथॉरिटीज को बोलेंगे कि मुझे पता नहीं था, देन दैट विल बी अ लाई। जी थैंक यू सर। I'd like to ask a follow up because I know कि इस पे बहुत रिएक्शन आएगा, so I'm just preempting this. आपने जो अभी कहा कि रिया को स्केपगोट बना दिया है, तो इस पे तो डेफिनेटली रिएक्शन आएगा सर, बिकॉज हम लोग, इस औरत का हमारे पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है कि ये 1 साल से सुशांत के घर में बैठे उसे लूट रही थी, उसे ड्रग्स दे रही थी और जो भी कुछ कर रही थी, है ना। कंपनी सेटअप हो रही थी, शी वाज मेकिंग वीडियोस ऑफ हिम टू शो कि ये ड्रगी है एंड ऑल दैट स्टफ। सो वी ऑल थिंक, एंड शी, आपके ही भाई ने एंड ऑल्सो ओझा जी, जो आई नो दैट यू गाइज आर वर्किंग विद हिम, वो हमें बता रहे हैं कि विद इन द लास्ट फ्यू डेज, जैसे आपने कहा 48 आवर्स 72 आवर्स हत्या के पहले, ये बात कर रही थी एयू से, आदित्य ठाकरे से रिया की बात हो रही थी। सो सर, हमें तो स्केप गोट का रोल नहीं नजर आ रहा है इनका, हालांकि ड्रग नहीं नहीं केस। मैम, नहीं नहीं जी मैम, जी, लिसन, नहीं नहीं नहीं, यस आपको यस आपको प्लीज।
आपको मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक हाउ यू गॉट ट्रिगर्ड व्हेन आई कॉल्ड हर द स्केपगोट, दैट्स व्हाट हैपेंड बैक देन 3 years बैक। रिया चक्रवर्ती बदमाश थी, उसने लूटा उसको, वो ड्रग देती थी, उसको डालो जेल में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर सुशांत को मारने में किस किस का रोल था, मुझे जो पता है, वो सारे वो केस के चार्जशीट में क्यों नहीं है, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। मेरे को रिया से कोई लेना देना नहीं, डालो उसको भी जेल में, अगर उसका रोल है, इफ शी इज पार्टी टू द क्राइम शी हैज टू गो टू जेल। बट रिया अकेली क्यों जाए, बाकी लोग को भी डाल दो। तो बाकी लोगों ने जो किया, उन लोग ने उसको बरोबर से उसके ऊपर टारगेट हटा के उनके उसके ऊपर डाल दिया, ये लड़की के ऊपर, चक्रवर्ती के ऊपर। ठीक है, she obviously she must be a party to the crime, but my thing is different. My thing is why only she should go? तुम भी जाओ, तुमने भी तो क्राइम किया साला, तुमने मारा। और उसने जो भी किया, ड्रग दिया होगा उसको, ये दिया होगा, उसका पैसा लूटा होगा। शी इज 100% a criminal in this case. I will never have any soft end for her, never. I don't even care what happens. She has to go to jail because if she has committed a crime, she has to go to jail. But why only Riya Chakravarti? Why not all those people who are involved in the murder case should go to jail? And that is what we are telling the authorities. Ki don't just target her, target all the others. Let her be in jail. I don't care for the rest of her life. But I want all the others to go to jail for the rest of their life. That's what I mean. ओके, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिफिकेशन नीलेश जी। एक्चुअली हम बहुत चाह रहे हैं कि वो जेल जाए, बिकॉज हम सबको लगता है कि वो एक्चुअली काफी चीजें बताएगी जब वो जेल में होगी। जिस तरह से वो फिर रही है इधर उधर, घूमती फिर रही है, अब उसका एलओसी भी क्वाश हो गया है, इसलिए आई थिंक हम लोग बहुत ट्रिगर होते हैं सर। इट इज जस्ट अ लिटिल बिट, यू नो, हम जब देखते हैं कि ये क्रिमिनल्स, इनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे ये सेलिब्रिटीज हैं, लाइक दे आर सम इन्फ्लुएंसर्स, तो इसको देख के हम बहुत ट्रिगर होते हैं। आई मीन, एंड यू आर राइट, एंड दिस इज really something that cannot be avoided. And I think the 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 system, CBI, जो भी agencies हैं, this has to be taken into consideration, because जब तक ये बाहर घूमती फिरती नजर आएगी हमें, तब तक we are not, हमें, आप जो कह रहे हैं ना बिगर पिक्चर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पर हम वो छोड़ ही नहीं सकते उस बात को, because we नहीं, मैं feel this समझता is, हूँ, आई जी जी अंडरस्टैंड, आई जी रियली जी। अंडरस्टैंड, आई रियली अंडरस्टैंड योर इमोशंस विद इट। बट मेरा इतना ही है कि रिया चक्रवर्ती तो जाए जाए, पर सारे क्रिमिनल्स ये केस के अंदर जो जो इन्वॉल्व है वो सारे जेल में जाए। दैट इज व्हाट आई मेंट। आई अंडरस्टैंड योर इमोशन। आई एम 100% विथ यू ऑन दिस। So, Nilesh ji, thank you so much for clarifying that. Another question would be when there is a clear link established. एक Rahul Shivale ji hai, I think he's from Shinde faction. He also spoke in 2022 regarding AU and Ria connection. Then, like a quick हम recap करें, back in 2020, हमने देखा था when Bihar police came to investigate on the family's FIR, Ria Chakravarti went into hiding. वो हाइडिंग में गई डीनो मोरिया के प्लेस, एंड आपके फादर एंड योर ब्रदर नितेश राणे जी often takes his name, Dino Moria. His name often comes. So there is, Nilesh ji, a clear link established कि if AU and Ria are not having a direct contact, then it could be through a third person like Dino Moria, because she was at his place, and then Nitesh Rane ji also बताते हैं कि AU is often seen at his place. So when this is the link which is there, then I wonder why there is no progress. Why? ये तो है ना रिया का लिंक. रिया seems, for me at least, and how we have observed this case, she seems part of the crime more than a scapegoat. No, I think you took the scapegoat word too seriously. She is a Sir, criminal. She'll sorry, always be we the get too criminal. triggered with this No, no, person. We I are too understand. But triggered. but ma'am, Thank ma'am, you. you have to understand one thing. You have to understand one thing, that the police, the courts of our country, or any country for that matter, they follow the evidence. They discuss the evidence. Now, in any open court, I can't go and say कि आज मंडे, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. No, I mean, it becomes a joke then. They, whatever submission that you place inside any court, or any agencies place inside any court, they have to follow a trail, and that's what we are after. We are after the trail. Now, just because someone goes to someone's house does not become factual evidence in any murder case. Okay, it can be a part of a trail, that why only his house.
He can go to 10 different houses and he can say, okay, I went to 9 more houses. That is also one part of the story. But the real thing is, you need factual evidence so that the case doesn't get punctured. And if the case is on factual evidence, there is no one in this world who can save Aditya Thackeray. We don't want to keep any loose ends. He goes to drink to Dino Moria's house. He goes to have a gay party at Dino Moria's house. I don't care. I only care is he has to be booked for Sushant Singh's murder case and Disha Salian's murder case. And what can I do, or what can anyone do in this, is to find as much evidence so that he's booked. Now, in any IPC, in any CRPC, किसी को क्या पसंद आया है, कौन किसके घर पे जा रहा है, उसके हिसाब से सेक्शन नहीं लगते. आज 302 लगाना है, सेक्शन 302 अगर किसी को लगाना है, तो कौन किसी के घर पे गया, कौन किसी के साथ क्या मैसेजिंग पे बात कर रहा है, उस वो एविडेंस जब तक फैक्चुअल नहीं है और उसको लिंक नहीं किया जा सकता वो मर्डर केस से, तब तक उसकी गिनती नहीं की जा सकती. आप मैडम प्लीज मेरी बात समझिए. Because we are in the real world, we have to deal with this real cases, real murder mysteries, and that's the reason I'm telling you. Riya Chakravarti, yes, she's a criminal. She will be booked. She will be behind jail one very very soon. Like all of these people, I don't want only Riya Chakravarti to go to jail. I want her to go to jail, but with the others. और जो 302 की केस, जो मर्डर केस हम लोग जो लगाने वाले, मतलब ये जो होने की कोशिश हो रही है, ये 302 की केस लगाने की कोशिश हो रही है. तो 302 में एविडेंस को क्या गिना जा सकता है? एविडेंस मतलब क्या होता है 302 केस में? तो एविडेंस मतलब 1 2 3 4 5 गिना जा सकता है. तो कोर्ट में स्टैंड होने के लिए, अदरवाइज द जज विल जस्ट थ्रो अ पीस ऑफ पेपर, वो फेंक देंगे. तो 1 2 3 4 5 जो एविडेंस करके गिना जा सकता है, यू हैव टू सबमिट ओनली दोज पॉइंट्स एज एविडेंस. अगर मैं कुछ भी बोलूं, सर आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज सर एसिडिटी हो गई, आज ऐसा नहीं होता ओपन कोर्ट में. यू विल लूज द इंटेंसिटी ऑफ द केस. जो जाना है कोर्ट में, इवन थ्रू द एजेंसीज, नाउ सीबीआई विल गो इन फुल फोर्स इनटू द कोर्ट सेइंग दैट सर वी हैव दीज 5 एविडेंसेस एंड दिस इज व्हाट क्लियर्स दैट दिस हैज बीन अ मर्डर केस. मैम आप प्लीज समझिए. आई मीन, आई एम एज इन्वॉल्व एज यू आर इन दिस, in these cases, because we are equally disturbed. I want them to go to jail, and we want them to go to jail. My brother, my father, or lakhs of people like you. हम लोग को उनको बुक करना है क्राइम में, पर कौन से क्राइम में? 302 के क्राइम में. तो 302 के लिए जो लगेगा, उसको वहां पे बुक कराने के लिए जो एविडेंस होता है, उनको ही एज एन एविडेंस जो कोर्ट में स्टैंड होगा, वो ही जाना जरूरत होता है. वो कितने लोगों से बात करती थी, आदित्य ठाकरे कितने लोगों के पास जाके फोकट की दारू पीता है, उसे लेना देना नहीं होता है कोर्ट को. आप समझ रहे हो मेरी बात? आप प्लीज समझ लीजिए. वी गेट इमोशनल समटाइम्स, एंड देन little bit, if this case goes here and there. Now this is a last chance, ma'am. This is a last chance. Now whatever happens now is final. तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि जैसा भी फाइनल हो, वो सही फाइनल हो. और रिया चक्रवर्ती हो, आदित्य ठाकरे हो, या उसका बाप भी हो, तो भी वो जेल में जाएगा. भले वो किसी की भी औलाद है, वो जेल में जाना चाहिए, क्योंकि मर्डर हुआ है. एक नहीं, दो मर्डर हुआ है. वही मैं कहना चाहता हूँ. जी थैंक यू सर. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. वी वांट, बिकॉज अगर हम टेक्निकली सोचें, मर्डर जो होता है, इट्स टेक्निकली जिन्होंने क्राइम सीन पे थे, जिन्होंने एक्चुअल में कत्ल किया था, वो तो 100% होने चाहिए. एंड देन यू नो द कंस्पिरेटर्स who are part of the conspiracy, वो भी हम देखना चाहते हैं. तो किसी भी तरह हमारा रिएक्शन, बस आई नो आप बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच, सो वी वॉन्ट कीप गोइंग इनटू दैट. सर आईड लाइक टू आस्क यू कि आप हमें क्या मोटिव के बारे में बता सकते हैं कि इसके पीछे वजह क्या थी कि ये दोनों लोग जो अदरवाइज वर फाइन एंड यू नो दोनों इंडस्ट्री के हिस्सा थे, एंड दे वर बोथ डूइंग वेरी वेल और अपना काम अच्छे से कर रहे थे. दिशा सालियान रोज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हर टैलेंट. तो हाउ, ये मतलब मोटिव क्या है सर? आप कुछ बता सकते हैं? दोनों के अलग हैं, सेम हैं? कुड यू गिव अस एन आइडिया प्लीज? मैम, द मोटिव कुड बी एनीथिंग. आई मीन, as far as I know, things got wild at a party, and as things got wild, they were ruffled.
I'm really sorry, sir. I think one of us clicked the button by mistake. Please go ahead, sir. Sorry about that. Sorry about that. आप बोलें. The party की बात आप अभी बोल रहे थे. अभी अभी आप नाउ यू कैन हियर मी? जी आ रही है आपके पास. Please go ahead, sir. जी जी जी। सो व्हाट हैपेंड वाज, पार्टी हुई थी। पार्टी में थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, दे गॉट वाइल्ड। और जहां जितने जानकार जो भी थे, ये सारा बैंड्रा और जू और वो विसिनिटी में हुआ है। एंड एज फार एज द पीपल अराउंड एंड वेर एवर वी गैदर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कि ये हुआ कैसे बॉस, और ये हुआ क्यों। इट वॉज इन द हीट ऑफ द मोमेंट दे से कि नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ, ये वैसा नहीं हुआ। एंड इट वाज उसके पीछे उनका मोटिव क्या था, वो अभी फिलहाल तो कोई नहीं बता सकता। पर थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड डिस्कशन डिस्कशन में। और ऐसा नहीं था कि ये प्लान मर्डर था या प्लान करके इसको बुला। हाँ, प्लान मर्डर कब था? सुशांत सिंह का। दिशा का, एज फार एज आई नो, एज फार एज पीपल टेल वो अराउंड, और मे बी जो सुनी हुई बात उनको जो पता है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट उन दिशा सालियान का प्रॉब्लम हुआ। उसको लोगों ने जबरदस्ती करना चालू कर दिया। And that's why I said in the beginning, I feel and I'm sure that she was murdered even before she was brought in inside her apartment. So I need to know who got her home. उससे ही सारा क्लियर होगा, क्योंकि मलाड पुलिस स्टेशन में हमने फोन किया कि वो सीडीआर कहाँ है बॉस, क्योंकि वो लड़की ने अगर कैब में आई है या किसी के साथ भी आई है, किसी को तो फोन किया होगा। किसी किसी ने तो उसके साथ बात की होगी शाम से। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो अचानक से पार्टी पे जाना उसने डिसाइड किया या अचानक से दोस्तों को मिलना वो चली गई। किसी को तो फोन किया होगा वो। तो पर वो वहां की पुलिस, मलाड पुलिस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी तभी, क्योंकि उनकी सरकार थी। तो वहां से इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिल पाई कि उसने किस किस लोगों से बात किया, किन लोगों से बात किया। Similarly, Sushant Singh got into the rough with the wrong kind of people because of some similar thing। कोई कोई आर्ग्यूमेंट से या दिशा की टॉपिक से कुछ शुरू हुआ कि someone told him that कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है दिशा के साथ और ये सब। और वहां से थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड। और even I'm sure about him that he was not alive when he was brought inside his own apartment. He was killed before that। और उन दोनों का जो ट्रेल मिला है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सीसीटीवी से या सीडीआर से ही मिल सकता है। वो उसका घर का नौकर भी नहीं बताएगा, उसका कोई नहीं बताएगा। उसको आपको टेक्नोलॉजी से ही ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन, किसने किया होगा, उसके पीछे उसका मोटिव क्या था। इसके लिए आई एम डेड श्योर दे वर किल्ड मच बिफोर दे वर गॉट इनटू द अपार्टमेंट। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. दिस इज लॉजिकल कि एंड नाम आता है एक फार्म हाउस का. सो दिस इज व्हाट वी आर हियरिंग. दिस इज अ लॉट ऑफ, मतलब काफी चीजें उसी डायरेक्शन में पॉइंट करती हैं टू द क्राइम सीन इज इन सम फार्म हाउस. आई थिंक आप भी ये तो कह ही रहे हैं कि घर पे नहीं हुआ उनके. So, okay. Let's then continue, sir. I'd like to ask you because a lot of people ये पूछते ही हैं, आपको भी पूछते हैं, आपके भाई को भी पूछते हैं, आपके फादर को भी कहते हैं. तो ये, और खासतौर से जो लोग चाहते हैं कि आप डिमोटिवेट हों और डिस्करेज हों, इस केस से ना जुड़ें, तो वो तो कहेंगे ही. बट जस्ट टू आस्क द क्वेश्चन सर, कि ये परसेप्शन बन रहा है कि आप सिर्फ आदित्य ठाकरे को ही टारगेट कर रहे हैं. And what about the role of Bollywood? What about the role of other politicians? तो ये बस I just wanted to ask you, sir, अगर आप इस पे कुछ बोल बोल दें. आदित्य ठाकरे को इसके लिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो साला क्रिमिनल है। मुझे अगर वो इसमें नहीं होता तो मुझे उसका नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती। और जहां तक दूसरे लोगों का सवाल है, आप समझ लीजिए कि सरकार में इसका बाप सीएम था। जितनी भी ताकत उन्होंने लगाई वो इसको बचाने के लिए ही लगाई। वो तो रोज हमको कहीं ना, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन द सेम प्रोफेशन बॉस, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द सिस्टम।
Okay, there is not a single politician in those in I think 2020 it was कि ये कौन कर सकता है, इतनी पावर कौन जनरेट कर सकता है, कौन मिसयूज कर सकता है। तो इस देश का मतलब इस स्टेट का सिर्फ सीएम यूज कर सकता है। वो टाइम पे इसका फादर सीएम था, और क्योंकि एक के बाद एक एविडेंस आते जा रहे थे, एक के बाद एक इसका रोल खुलते जा रहा था सब। तो मैं आदित्य ठाकरे का नाम क्यों नहीं लूं? क्यों? मैं तो इसके बाप से भी नहीं डरता, ना मेरी फैमिली डरती है। और और ये तो इतना बदमाश है, ये तो आज भी 4 जगहों पर पड़ा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये आदमी ने क्राइम किया है, और अच्छा आदित्य ठाकरे को पकड़ोगे ना, तो बाकी के सारे नाम आ जाएंगे ना। तो अपन सी व्हाई आर वी टारगेटिंग 2 3 4 5? वी शुड टारगेट द वन पर्सन was mainly responsible for all this, और जो इन सबको बचाने में सक्सेस मिला उसको। तो अगर उसी की गर्दन पकड़ोगे, तभी तो जाके चीजें खुलेंगी, तभी तो पता चलेगा दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था। अगर बॉस ही नहीं पकड़ोगे, तो वो नीचे के एम्प्लॉय को पकड़ के बॉस ने झोल क्या किया, या बॉस ने किया कौन सा क्राइम, वो पता पता कैसे चलेगा? इट इज नॉट अबाउट आदित्य ठाकरे, बट बिकॉज आदित्य ठाकरे इज अ क्रिमिनल, because he has done it, and even he knows he has done it, he went into hiding, he went into trauma, he knew what was going to happen next, but उसका अच्छा वक्त बोलो या उसकी नसीब बोलो कि वो डाइवर्ट हो गया ड्रग केस पे, और वो साला बच गया। नहीं तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस was he not party to the crime. I'm still very sure, and whatever things will come out in the near future, मुझे पता है कि वो आदित्य ठाकरे की जगह पे कोई दूसरा भी होता, तो भी मैं इतनी डीपली जाके उसको स्टडी करता, इतना ही डीपली उसको ढूंढता कि इसमें असलियत में क्या हुआ है। हम भी इसी मुंबई शहर में रहते हैं। आई ग्रो अप इन मुंबई, आई वाज बोर्न इन मुंबई, सो आई नो what happens in Mumbai, where he hangs out, and because he is our principal opponent, okay, I will obviously try to find out where is he going wrong. And when I know the group he hangs out with, the things he does every evening, or maybe 2 evenings in a week, I'm dead sure. And whatever evidence that I could get and I could gather, I have already given to the authorities. I can't discuss everything here, but I'm sure that he was a party to the crime. He is the main part of the crime. So there is nothing against him or his father. It's not just because he is my opponent, or we are politically opposite each other. ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जगह पे कोई भी होता तो मैं इतना ही सिवियरली उसको फॉलो करता, या मेरी फैमिली उसको फॉलो करती। बट क्योंकि उसको मालूम है हम लोग 3 यहाँ पे हैं, तो उसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि he can't bias, he can't bend us, and under no circumstances he can defeat us in all this, because he knows we'll try to grill him from all sides, and that's what we have been doing, only with the intention that the real criminals should be booked and be behind jail. बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर, एब्सोल्युटली। नीलेश जी, जस्ट अ क्विक फॉलो अप बिकॉज वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स ऑन दिस। आप जैसे कह रहे हैं कि सारे सबूत मिटा दिए गए और सीसीटीवी फुटेजेस मिटा दिए गए एंड ऑल दिस, तो सर क्या कोई विटनेसेस जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ द बिल्डिंग और इस तरह के, आर दोज अवेलेबल टू द एसआईटी, जस्ट एज अ Ma'am, जनरल विटनेसेस? जी जी। ma'am, now we have to think like some agency officer. Okay, I just one for 1 minute. Now, even if the evidence is wiped out, just take it uh, in your head for 1 minute. ठीक है? तो एविडेंस कौन वाइप आउट करेगा ना, उसका भी एक ट्रेल होता है। आप समझ रहे हो? तो ऐसा देखो, क्राइम कभी छुपेगा नहीं। वो कितने भी होशियार होने दो, वो कितने भी उनको एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने दो, बट डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंस इज ऑल्सो अ ट्रेल। सो वंस दी एजेंसी, नाउ एजेंसीज मतलब कौन? ये कोई घटकोपर की क्राइम ब्रांच नहीं है। We are talking about CBI here, so they have all the infrastructure to follow the trail, to collect the trail also. तो आप समझ लो, एविडेंस डिस्ट्रॉय किया मतलब वो होशियार नहीं थे। एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया मतलब उन्होंने उसका भी एक ट्रेल छोड़ा है। तो वो जब ट्रेल मिलेगा, अभी जैसे मैंने सचिन वाजे का नाम लिया, तो सचिन वाजे ने अगर एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है, तो सचिन वाजे अगर अंदर जाके उसको जो भी इंट्रोगेट किया जाएगा,
अगर उसमें उसने कबूल कर दिया, हाँ मैंने ये किया है और किसके बोलने पे किया है, तो दैट इज द ट्रेल आई एम टॉकिंग अबाउट। आप समझ गए? तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो 70 दिन में, इधर मुंबई में चप्पल भी ढूंढा जा सकता है, मंदिर के बाहर का। तो आप ऐसा मत समझिए कि उन वो बहुत होशियार थे कि सीसीटीवी गायब कर दिए या उन्होंने सीडीआर गायब कर दिए, सर्वर गायब कर दिए। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेल कि ये गायब कब हुआ। इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ बिगर नेट, आप समझ लो। मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर उन्होंने, उनको लगता है किया भी है, एंड वॉट एवर सीबीआई मस्ट हैव फाउंड आउट आफ्टर दैट, कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने वाला भी तो एक ट्रेल होता है, कि वो डिस्ट्रॉय हुआ कहां से, किसने किया होगा। तो व्हेन दे विल स्टार्ट पिकिंग अप दोस पीपल्स एंड फ्रॉम दोस व्हाटएवर इज लेफ्ट, दैट इज हाउ दे फाइंड द ट्रेल एंड दैट इज हाउ दे गेट टू द रियल क्रिमिनल। जी थैंक यू सर, एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं कि एविडेंस मिट भी गया तो किसने मिटाया, दैट इज अ ट्रेल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर आई ओनली हैव 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, उसके बाद में आप मुझे बता दीजिएगा इफ यू वांट, इफ यू हैव मोर टाइम, बिकॉज वी हैव मीना दास नारायण मैम हु इज आल्सो हियर। आई विल आस्क माय फाइनल 2 क्वेश्चन सर। एक सवाल जो लोगों को बहुत आई थिंक अखरता है सर, एंड दिस इज जस्ट अ जनरल फीडबैक, हालांकि आपको ये पता होगा, बॉलीवुड की तरफ जो हम नरमी देख रहे हैं आजकल फ्रॉम द लीडिंग पॉलिटिकल लीडर्स, ये हम लोगों को बहुत अखर रही है सर। ये बात, ये हम लोगों को एक इंडिकेशन लग रहा है कि यू नो द पार्टी दैट वी सपोर्ट, दैट वी इलेक्टेड, बहुत सॉफ्ट हो रही है टुवर्ड्स बॉलीवुड, और इनके क्राइम्स दे गो अनपनिश्ड। मतलब ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, समन्स आते हैं, ये लोग समन्स इग्नोर करते हैं। इट्स हैपनिंग सो मच, एंड ये चीज हमें बहुत दुख देती है और बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है सर, बिकॉज वी हैव सो मच फेथ इन नरेंद्र मोदी जी, एंड वी आर, इसीलिए वी आर मोर डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ आवर फेथ इन हिम। And हमें नहीं लगता था that you know this is the kind of leadership that will favor Bollywood, because we associate that with the previous government. तो सर आप इस पे कुछ कहना पाएंगे? This is just a general question. It's not so much. It's also case related because Bollywood का नाम है. But अगर आप इस पे कुछ बोलें, that would be great, sir. मैम आई वुड लाइक टू नो इफ यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक कि इसको बॉलीवुड में, बिसाइड्स दिस केस, कि इसमें भी छोड़ा किसी को भी नहीं है, बट इफ यू कैन टेल मी समथिंग स्पेसिफिक कि ये केस में इसको समन्स के बाद या उसके ऊपर एफआईआर होने के बाद, सी द मेन थिंग इज यू हैव टू लॉन्च एन एफआईआर। अनलेस एंड अनटिल एन एफआईआर इज लॉन्च्ड, you cannot take him to any court, or you cannot declare him a criminal, or you cannot call him to a police station. So if you can tell me about what specific कि इसके साथ ऐसा हुआ है, तो I would be able to answer better. Yes, sir. Of course. दो जो बहुत recent cases का ही मैं बोलती हूँ। एक तो है ये रणबीर कपूर. He was summoned by ED. तो ये जो चला रहे थे, कोई ऑनलाइन ऐप था, महादेव ऐप था आई थिंक, तो उसमें ही वाज समन्ड एंड ही डिड नॉट शो अप टू द समन्स, और उसके बाद में ये मीडिया से बिल्कुल ही गायब हो गई ये बात। एंड दूसरा एग्जांपल है सर जैकलीन फर्नांडिस, फॉर एग्जांपल जैकलीन फर्नांडिस वाज इवन चार्ज शीटेड, एंड इवन इन कोर्ट, दिल्ली में जो कोर्ट था वहां पे ये भी पूछा गया बाय द कोर्ट जज टू ईडी कि आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया है अभी तक। So then this lady in fact moved to quash the entire FIR. So sir, ये बस दो छोटे examples हैं, but you know there's more. I can give more, but I think that is illustrative. Okay, so I think this Ranbir Kapoor ka case, see, if I'm summoned for some reason tomorrow, okay, I have a leverage of telling or informing the police कि आज मैं बीमार हूं या मेरे घर पे ऐसा है या वैसा है. Couple of times even I can dodge the summons. Okay, so there is a provision in law that couple of times you give a proper appropriate reason for whatever you can't. I mean, if you can't appear in front of the court or in front of the police or the authorities or agencies, you have that leverage to inform them couple of times. But he appeared in front of the court, that's or the agency or whoever was interrogating him,
एंड उसने बोल दिया. अभी व्हाट हैपेंड वाज, आई थिंक उनकी जो एग्रीमेंट होती है विथ, फॉर एग्जांपल ये जो ऑनलाइन बेटिंग गेम था, तो वो ऑनलाइन बेटिंग गेम में उनकी एग्रीमेंट को पढ़ा जाता है और एग्रीमेंट के हिसाब से उनके ऊपर लॉ इम्पोज किया जाता है. तो व्हाट वाज रिटन इन द एग्रीमेंट आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ, बट एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, लूपहोल्स होते हैं टू गेट द सेलिब्रिटी आउट, इवन इफ देयर इज अ मेस, लाइक हाउ इट वाज अ मेस फॉर हिम. Jacqueline was 100% what you're saying is right. She was charge sheeted and she was part of a bigger crime. And I think she's still not out of that matter. I'm not sure if she is. But Bollywood को ही बचाना है या बॉलीवुड में ही लोगों को सॉफ्ट रखना है. I don't think that is any policy matter regarding this. I don't see it is a hard policy that the BJP has thought about कि इनको safeguard करना. As far as I know, Modi साहब, Modi ji, or whatever BJP that we have seen, they will not leave anyone. If tomorrow, me being an ex-member of parliament, if tomorrow I go wrong somewhere, they will not try to save me, or they will not try to cover me in any way. uh, हुई होगी ऐसे, आई मीन पब्लिक सेंटिमेंट में ऐसा आया होगा कि यार इसको बचाया जा रहा है, बट आई डोंट थिंक शी इज स्टिल आउट ऑफ द केस, एंड नो वन फॉर दैट मैटर, बी इट बॉलीवुड इंडस्ट्रियलिस्ट और एनीवन फॉर दैट मैटर, स्पोर्ट्समैन और एनीवन. आई डोंट थिंक कि बीजेपी बॉलीवुड ओरिएंटेड है या कोई ऐसे, मतलब दे विल नॉट ट्राई टू सेव एनीवन जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम अ सर्टेन फ्रेटर्निटी. आई डोंट थिंक दैट इज द इशू विद बीजेपी, एंड दे विल नेवर डू इट. नाउ आप अगर पीछे जाके सोचे, मोदी साहब का अगर आप जीवन देख ले, तो ही इज ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ मैन. आई मीन ही विल नॉट ट्राई टू, आई मीन वो उनकी उनकी माता जी हो, उनकी फैमिली हो, वो उनको पॉलिटिकल या उनके दिल्ली के घर में भी, या वो अकेले ही रहते हैं. आई मीन ही हैज only thing, I think, looking at him, I saw him in that convention, national convention 2024, couple of days back. And when you look at that person, I don't think he has any intention to get anything out of his post, or that prime ministership that that he, I mean, prime minister that he is today. उनको कुछ मिलना नहीं है उससे, उनको कुछ चाहिए नहीं वो पोस्ट से. And that is the greatest thing about him. He is not for his family. He is not for anyone. He's just sitting there so that the world, this country becomes a better country. जो ड्यू है ये कंट्री में, वो कंट्री को मिले. और मोदी जी इतने डेडिकेटेड ये हैं ना, जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम बीजेपी, आई विल नॉट ट्राई टू से समथिंग विच इज नॉट रियल. जो उनको मैंने देखा है ना, एक आदमी को क्या चाहिए होता है, फैमिली चाहिए होती है, एक बैंक बैलेंस चाहिए होता है, एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, फ्यूचर सिक्योर चाहिए होता है. ये आदमी के पास कुछ भी नहीं है. नो व्हाट ली ट्राई टू प्रोटेक्ट बॉलीवुड फॉर, उनको कुछ चाहिए ही नहीं. ही इज स्पेंडिंग टाइम, ऑल हिज टाइम फॉर हिज कंट्री. वो बेचारे दिवाली भी कश्मीर में आर्मियों के जवानों के साथ स्पेंड करते हैं. नाउ व्हाई, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन लाइक हिम? उनको बॉलीवुड से, इंडस्ट्रियल लोग से कोई लेना देना है ही नहीं. He is a very dedicated man towards his work. For all that I have seen in these years that I've been in this party, and even before that, he was a very dedicated, always a dedicated. और उनको कुछ नहीं चाहिए, मैडम सच्ची में बोलता हूँ मैम. He wants nothing from this country. He wants to give whatever he can, as much as he can, because that's what he's for. That's what he feels कि यही मेरा जॉब है. Being close to Bollywood, being close to any industrialist, उनको कोई लेना देना ही नहीं है. If he doesn't want to look back and say कि मुझे इनके लिए ये रख के जाना है, he has nothing to keep for anyone. So I don't feel that this is the sentiment that the BJP is carrying, in not even 1%. तो मुझे लगता नहीं है. But जैकलिन हो या कोई भी हो, अगर लॉ के बीचों बीच हो, तो it's not that BJP wants something like this. But अगर ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं सही लगता है, क्योंकि मोदी जी एंड द पार्टी, एज आई हैव सीन, ये लोग, इनको सिर्फ जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी के बाहर जाके काम नहीं करते. Yes, sir. नहीं आप thank you so much for giving that view. Just by way of feedback, sir. बस जिस तरह से हम आपको convey कर सकते हैं, because you are very important in this movement, and also you are
टॉकिंग टू अस सर. सो पहले तो मैं वही कह देती हूँ, आप जो एंगेज करते हैं हमारे साथ एंड इंक्लूडिंग योर ब्रदर, दिस इज कमिंग अक्रॉस सो वेल, बिकॉज हम देखते नहीं है ना नेता लोग हम लोगों से जुड़े, बिकॉज टिपिकली यू नो दे विल कम टू अस व्हेन इट्स वोटिंग टाइम, बट हम ये नोटिस कर रहे हैं कि आप regardless of vote and all that, because we are not your core voters anyway. I mean, we are sitting all over the world. So this comes across as a very genuine gesture, sir. We really, really appreciate that. But by way of feedback, sir, if you would allow, हम यही नोटिस कर रहे हैं कि we just feel कि you know बॉलीवुड को जितना जितना भी बढ़ाव कोई भी देता है, हम उससे भी ट्रिगर होते हैं. So, you know, we know that not everybody sitting in Bollywood is, you know, हत्यारा, लेकिन हमें ये लगता है कि ये सबके सब वाकई में बुरे लगता है. हमें इनकी कोई चीज अच्छी नहीं लगती. आपको पता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है. So that's just a general way. We are trending away from Bollywood. We do not consider them role models. तो जब इनको awards मिलते हैं या इनको राम मंदिर में बुलाया जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है, because we feel कि ये खुद बहुत ही अपवित्र हैं. ये they don't deserve it. But that's just a general feedback for you, sir. I'm sure you're hearing this. I know what you mean. I really know. I mean, I personally, I don't watch movies. I don't go to their parties. मुझे कोई लेना देना है नहीं उनसे. मैं उनके लाइफस्टाइल जैसा लाइफस्टाइल जीता भी नहीं हूँ. 8 बजे खाना खाने वाला आदमी हूँ, तो मुझे उनसे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है. And nor do I see any of their movies, or I don't even remember the last time I went to a theater to watch a movie. Not because you mentioned it, but anyways, I don't follow anything that they have to offer. I mean, actually, they don't have anything to offer. उनसे सीखने जैसा मुझे नहीं लगा. इससे अच्छा मैं किसी नगर सेवक या कॉर्पोरेटर से सीख जाऊं. But I know what you mean. आप सही हो कि they should not get away with everything. Yeah. Ji, Nilesh Ji, Uh, thank you so much. Meena ma'am, just 1 second, ma'am. So thank you so yeah. much for that answer, Nilesh Ji. It's very, and actually आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. We don't see you and your family so much with Bollywood. We notice that, and वही हम indications देखते हैं. So we really appreciate that, sir. You're dedicated to this cause. You are with us in this, and we are with you, sir. So now, sir, I don't know how much time you have. आप मुझे बता दीजिएगा. We have Meena Das Narayan, ma'am, who's a journalist. She would like to ask a question. Is that okay with you, sir? Yeah, we'll take a And then couple of we'll more. go. Okay. Yeah. Thank you so much, sir. Yeah. Meena ma'am, welcome. Thank you. Please go ahead, ma'am. Yeah, thank you so much, Nanbai. Thank you, Nilesh Ji, because it's a pleasure to listen to politicians like you who speak their minds so openly, you know, and I've been listening very quietly and seeing how well you speak. Now, my question is just a simple one and a very direct one. And do you think that Sushant Singh and Disha were killed because of the child trafficking angle? There They were was an going to angle. expose. They were going to expose that. There was an angle about this. Yeah. But ma'am, like I said in the beginning, that I don't want anyone Yes. Yeah. to take advantage of what we say here and Yes. then Absolutely. give it to the authorities. So if you can please understand, right, Yeah. ma'am? I understood. Yes. Thank you so much for that. Thank you. Meena ji, Thank anything you. else you want to ask, ma'am? No, That's it? it's okay. Okay. I'll give it to Okay. others. Yes. Thank you, Meena ji. So बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Nilesh sir, for coming, for joining us. आपने काफी समय बताया, so I really appreciate that. Full 40 minutes. And we look forward to having you again, sir. Please keep connected. हम लोगों से connected रहिएगा. We are here to support you. And the more that you fight, the more of us will join you. So बस ये मुझे आपसे कहना था. And again, huge thank you to you, sir. Namaskar. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. And I'm really proud of all of you all. I'm always with you till the end for whatever cause, whatever is wrong, we will not leave it. हम लोग लड़ते रहेंगे. We will fight for this and we will win this. So don't lose hope. That is all I have to say. We have come a long way into this case and बहुत कुछ करके, बहुत hurdles को क्रॉस करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं. तो don't lose hope. Don't get too emotional.
I know it's a very big thing that has happened and 3 saal ho gaye and all that. I know all of that, but don't lose hope. That's all I want to say. And you guys are amazing. I mean, I haven't seen another movement so strong in this country as this movement, and I'm really thankful that you guys have called me here to listen to me, and you've been listening to me for the past 40 minutes or so, and I'm really thankful. And whenever you call me for anything, I'll always be there. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. So, guys, I will be ending the space so that the recorded session is the session where Nilesh ji has spoken. So, I'm ending the space and we'll try to do a